Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. This is Shazana Miman, the host for today's event. I'm working with NIC Hyderabad as a manager monitoring and evaluation. And apart from this, I'm voluntarily working as a global coordinator for which is a project of Aspire Pakistan. एस्पायर पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी. पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन ज़रूरत है कि उन नेमतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके पाकिस्तान को प्रॉस्परस बनाया जाए, और यही ऑब्जेक्टिव एस्पायर पाकिस्तान का है, which is the non-profit organization formed by the network of overseas Pakistanis with a vision of a socially and economically prosperous Pakistan through innovation and entrepreneurship. एस्पायर पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है स्टार्टअप शोकेस, वो एक्चुअली एक ऑनलाइन इवेंट है जो कि हर मंथ में हम एक दफ़ा करते हैं. और इस एस्पायर स्टार्टअप शोकेस का मकसद है कि सारे ही एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए, ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, और जो हाईली इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं उनको हम ओवरसीज इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट. आज के इवेंट की एक खास बात है, वो ये कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने हमारे साथ इस इवेंट में कोलैबोरेट किया है, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हैज साइंड द MOU विद एस्पायर पाकिस्तान. उस MOU के तहत PEC ICE 15 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करेंगी, और उनको जो प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स होंगे, हाईली इनोवेटिव स्टार्टअप्स होंगे, उनको वो फर्दर गाइड करेंगी और हेल्प आउट करेंगी उनको मटेरियलाइज करने में. इसलिए आज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के कुछ जो ज्यूरी मेंबर्स हैं, उन्होंने हमें इस इवेंट में ज्वाइन किया है, जो कि एक मिस्टर रियासत अली चंगेजी साहब हैं, जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, डॉक्टर भवानी शंकर चौधरी वेल नोन प्रोफेसर, और उनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर HEC और PEC के भी रहे हैं मौजूद हैं. उसके अलावा उनकी और भी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं. उनके अलावा तीसरे मेंबर जो PEC के से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो हैं इंजीनियर जावेद इकबाल साहब. इंजीनियर जावेद इकबाल साहब इज द मेंबर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कमेटी ऑफ PEC. अब मैं दावत दूंगी रियासत चंगेजी साहब को, अगर उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है तो वो काइंडली PEC के हवाले से थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को शेयर करें, और इस MOU के हवाले से. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियासत अली चंगेजी है. मैं पाकिस्तान इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कमेटी का मेंबर हूँ. तो हमारी ये कमेटी बेसिकली इंजीनियर्स जो PEC के रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए और उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मतवज्जा करने के लिए बनी है. इस कमेटी में साहब जरा मुखड़ा तो दिखाएं. अच्छा जी, हमने तो क्या मजा आया फिर. काले स्क्रीन क्यों देख रहा हूं. बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो आए सारे लोग अगर वो ऑन करे तो उससे प्रॉब्लम होगा. मैं कर देता हूँ. Please, the people who are speaking should have it on. जी, अब तस्वीर आ रही है? जी आ रही है, अब आ रही है जी. ओके डॉक्टर साहब. ओके, सो हमारा जो मेन एम है, हम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं. इस कमेटी ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए बायलॉज भी बनाए हैं, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बायलॉज भी बनाए. इसी तरह जैसे आपने 2019, 20 और 21 में इस कमेटी का सुना था वेंटिलेटर्स का, हसन साहब को अच्छी तरह पता है. उस वेंटिलेटर्स में हमने बहुत हेल्प किया था, बल्कि हमने पाकिस्तान में एक पैराडाइम शिफ्ट लिया है कि हम ये काम कर सकते हैं. अब इस वक्त हमारे जो मेन पर्पस है आप लोगों के साथ इस MOU का, कि हम चाहते हैं इंजीनियर, रजिस्टर्ड इंजीनियर एंटरप्रेन्योर्स को हम प्रमोट करें, उनकी ट्रेनिंग करें, उनको हम लोन्स वगैरह दिलवाएं और उन्हें मुख्तलिफ ज़रियों से आगे ले जाएं. हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं वो खुद भी जॉब, बजाय जॉब लेने के वो खुद जॉब दे दे लोगों को. तो इस सिलसिले में हमारा जो पहला हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ MOUs की है, लाइक हसन साहब के साथ हुआ है,
سمیڈا کے ساتھ ہے. اسی طرح سامان شفا فاؤنڈیشن, میں چیئرمین R&D سامان شفا فاؤنڈیشن بھی ہوں, جس میں بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو میڈیکل ڈیوائسز اور میڈیکل اکوپمنٹ ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کی طرف لے جائیں. جیسے آج سے 20 سال پہلے میڈیسنز میں پاکستان کا جو امپورٹ تھا وہ 80% تھا, ایکسپورٹ 20%. ہم اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان کے ٹاپ اور بیسٹ ڈاکٹرز ہیں, بیسٹ انجینئرز ہیں, اور 10 بڑی فارما کمپنی ہے, الیکٹرانکس کمپنی ہے, گروپ آف کمپنیز ہیں. ہم وہاں سے بھی ان انجینئرز کو سپورٹ کریں گے. بیسیکلی ہمارے ساتھ 10 یونیورسٹیز ہیں اور 3 میڈیکل کالج اور 5 ہاسپٹلز ہیں. سو یہ سارے ریسورسز جو بھی انٹرپرنور کو ہم فائنلائز کریں گے وہ ان انٹرپرنورز کو یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوگی. تو آج ہم ہمارے جیوری میں 3 لوگ ہیں, چوتھا ہمارا ایک اور ممبر بھی ہے. سو ہم آپ یہ سارے جی میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں. شاید ریاض علی صاحب کا کچھ پرابلم ہے انٹرنیٹ کا. وی ہیو ٹو موو آن. جو جی تو ڈاکٹر ریاست علی چنگیزی صاحب بہت شکریہ. جو آج کی جیوری ہے وہ بیسیکلی ساری جو پریزنٹیشنز ہیں ان کو دیکھے گی اور وہ پھر اپنے سلیکشن کرے گی, اور بعد میں جو سلیکٹڈ اسٹارٹ اپس ہیں ان کو انفارم کیا جائے گا نیکسٹ لیول کے لیے. تو تھینک یو سو مچ. بیک ٹو یو شیزان. تھینک یو سو مچ سر. آج کے ایونٹ کے لیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارے پاس 10 اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ آج اپنے اسٹارٹ اپس کو شوکیس کریں گے, اور 1 بائی 1 ہم ان کی ویڈیوز کو پلے کریں گے. ٹوٹل کا ٹائم ہوگا جس میں پہلے ان کی ویڈیو پلے ہوگی, اور اس کے علاوہ ان کا 1 منٹ کا وہ خود انٹروڈکشن یہاں پر دیں گے, اور اس کے بعد کوسچن آنسر سیشن ہوگا 3 منٹس کے لیے. اس سارے پروگرام کو ماڈریٹ کرنے کے لیے آئی وڈ لائک ٹو انوائٹ مسٹر نعیم ظفر, who is a seasoned executive who led 5 high-tech businesses as a CEO and guided dozens as a board member and advisor. His latest venture is Telesense, an agtech company. He is addressing the need to create efficiency and reduce spoilage for the post-harvest grain industry. So, Naeem Zafar Saab is an entrepreneur. And currently he has been linked with the Silicon Valley and promoting the lessons of Silicon Valley to the organizations and entrepreneurship all over the world. So now. Yeah, thank you. Thank you everyone for starting this thing. We are back on time almost. So this is good. So my job is to keep it flowing and make sure we don't stay longer. We are tightly timing this thing. So 2 minute ka video, 1 minute ki zara introduction, 3 minute ki baatein, phir uske baad next team aayegi. So fatafat kayenge. So judges and jury, please be ready with your pointed questions. But I may have to, interrupt you guys to keep the time going. So that's where we are. And I'm coming to you from Silicon Valley. It's the morning 9 o'clock here in California, near San Francisco Bay Area. And I'm hosting actually 20 executive MBA students from LUMS this week. So there has been a lot of interactivity with Pakistan this week. So Chalein, let's start with Ahsan Aman. Our first company is 5000. So let's see their video, and then we'll hopefully hear from Ahsan, who will be turning on his camera too. Kashif, you're on. Kashif, please play the video for Ahsan Aman 5000. All right, since he's not doing it, I'll do it, because we cannot slow down the whole, and I just want to make sure I can share the audio, share the sound, and there we go. Hi, I am Ahsan Aman, founder and CEO of 5000, which is the world's first mobile-based counterfeit currency detection system. Last year in the month of September, we did a survey where we found out that 26 out of 36 businesses were a victim of counterfeit currency fraud. These businesses lost around a total amount of $5,000
500,000 Pakistani rupees, 5 lakh rupees. Out of it, 85% was lost by businessmen and the rest 15% was lost by businesswomen, which is around 75,000 Pakistani rupees. As of now in Pakistan, there is more than 700 billion rupees in circulation, which is called the CIC, cash in circulation in banking terms or technical terms. So you can imagine the extent of this whole situation is. This is where 5,000 comes in. 5,000 aims to empower the business community against the counterfeiting fraud by providing them with an app and a small hardware. The 5,000 app has an AI-based algorithm which does all the working for the business community. All you need to do is that you need to attach the device on top of your mobile phone camera, open the 5,000 app, place the note and tap on the start scan button. And within 3.5 seconds, the mobile app will tell you whether the currency is real or not. During our survey, we showed the first prototype to the business community and 31 out of 36 businesses really liked our product. And so far, our market validation is about 86%. As far as our business model is concerned, we'll be selling the device for 5,500 rupees and each device will come with a unique OTP code, which they will be required to use for register their account so that they could use the scanning interface. So people who actually bought our product can use our product. The mobile app will be free to download but not free to use. As far as the reliability is concerned, no internet is required. Every operation and AI model is embedded within the mobile app, so you won't be needing the internet connection on each and every scan. There is no central processing hub for each and every device, so every device will be operating independently, making less prone to crashing. So this was 5,000 and our idea, and I really hope that you like it. Thank you. Thanks so much. All right. So we'll stop the sharing and hopefully we'll hear from Asan. Where is Asan? Assalamu alaikum, everyone. Okay. So can you guys hear me? Yes. Okay. So first of all, I would, I sincerely appreciate your attention to my pitch video. As I mentioned that I'm Asman, I'm the founder of 5,000, and this is the world's first mobile-based counterfeit currency detection system. Our business model is in 3 forms. First is we will be selling the device for 5,500 rupees. Second, will be generating revenue from via ads within the mobile phone application. And the third is interesting one is that the data will be generating is really valuable. So, selling that data is also, make us profitable. So these are the 3 ways we'll be generating revenue. And the ask is informal investment and strong connections as well, so that we can, create a broader use cases for our product. So that's it. That's good. How much are you seeking to raise? Kitne paise chahiye aapko? Yes, sir. So about 5.2 million Pakistani rupees, which is about around $25,000, I guess, in USD. Got it. And that will take company to what stage? Yes. So this will take the company to create new products for new products, right? So it will take us on the path of serving or creating products for the industrial level. Let's open it up to jury, guys. Any questions? We have 3 minutes. Where is my jury? Asan, what is your background? Are you from engineering or what is your technical background? Yes, so I've completed my bachelor's degree from Comsat University and specializing in AI, artificial intelligence. Sir. So you are an engineer or non-engineer? Are registered with PEC? Yes, sir, I believe. Yeah. Okay. Thank you. Who is in the jury? Dr. Bhavani is in the jury. Hassan, who else is in the jury? Riyasat Ali Saab, Dr. Bhavani, and Engineer Javed Iqbal. All right. Let's hear from Javed Iqbal Saab or Riyasat Saab. I have no question. Okay, The question else? I wanted to ask, Dr. Bhavani has asked that question. All right. Well, we still have a right. minute. If anybody else from the audience wants to ask a question, they can do because we have 1 minute Yeah. left. Ranas. Sorry, I have a question. Can you hear me? Anji. Okay, so just a question. Number 1, why would you, the device that you're adding on to the iPhone, is it just a camera or is it doing something more than that? It's doing more than that. It's a special design lens. And the technique we're using is, we are using a microscopic technique
for the image acquisition. So the whole process is based on image acquisition. So it's really mandatory to place that device on top of the camera. Okay. Second question, is your product just limited to Pakistan, or is there any reason why it would not be used, across the globe? Yeah, we are also detecting foreign currencies as well. So yeah. And then one final question for this, 5.2 million. What is the percentage of company or, as shares? Yes. So far we'll be doing about like a share, and we'll be sharing the equity around 20 to 25%. Okay. Thank you. Yeah. Just one more question in that line. I wanted to find out that could the banking industry adopt the technology at a larger scale instead of going a typical route, perhaps? So got it. Hassan, don't answer it. Take it as a note. Anwar, you get the last word. Yeah, so I was just asking that, can a competition do the same thing without using that hardware device? Because if they can, that there would be an advantage, because that's an inhibiting factor, distributing hardware device. So Hassan, do you want to say yes or no quickly? Okay, so should I answer? Yeah, you got 30 seconds. Just be fast. So the last question is that, sir, currently we are the only one. So we are in the process of patent as well. So it gives us initial advantage as well. The first question is a really interesting one. This is the reason why we are seeking around 5.2 million, because it is going to help us create products. So as of now in Pakistan is importing machines, counting machines from Japan, right? State Bank of Pakistan is importing machines from Japan. So using that money and strong connections, we'll be able to create machine in-house. So it's definitely going to. Okay, we'll take that answer offline. Bing Dong, 7 minutes is up. Next, thank you very much, Hassan. We're shifting. Anwar will connect with you separately. Now, time is up. We're going to Afshin. Sayyid Afshin. Cash the trash. Sir, kindly play the video first. No, I'm going to play the video. I want Afshin to be alive. Yeah, she is live. All right, then I will play the video. Assalamu alaikum. मेरा नाम सैयद अफशीन है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मास कम्युनिकेशन में पीएचडी कर रही हूँ। मेरे स्टार्टअप कैश द ट्रैश का मकसद है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट करना थ्रू सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सिटीजन एंड, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इतने बड़े मसले को हल करने के लिए बिहेवियरल चेंज और सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट की पायलट स्टडी मुकम्मल हो चुकी है और अब हम IBA कराची की मदद से स्मार्टफोन एप्लीकेशन की डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। इसके तहत हमारे डिपॉजिट सेंटर में सेग्रीगेटेड वेस्ट डिपॉजिट कराने पर यूज़र को रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे, जो कि वो रिडीम कर सकेंगे कैश और दूसरे आइटम्स के बदले। इस तरह से सॉलिड वेस्ट का ज़्यादा हिस्सा रिसाइकिल और रीयूज़ होगा, बजाय इसके कि वो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन बने। एस्पायर पाकिस्तान एक बहुत ही हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। यहाँ आइडिया शेयर करने पे न सिर्फ इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिली, बल्कि प्रॉपर मेंटरशिप भी प्रोवाइड की गई। ये बताया गया कि किस तरह से अपने आइडिया को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसमें मौजूद कमी को या वीक एरियाज़ पे काम करके उसको बेहतर बना सकते हैं, वर्केबल बना सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर करें, और अगर आप में से कोई भी किसी भी तरह यहाँ पर शेयर किए गए आइडियाज़ को आगे बढ़ाने में किसी भी किस्म की कोई मदद कर सकते हैं तो काइंडली आप लोग ज़रूर आगे आएँ। यहाँ पे शेयर किए गए आइडियाज़ को आप प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मसाइल के हल में अपना हिस्सा डालिए। All right, let's hear from Afshin because we did not understand what she does. She does. Assalamu alaikum. Okay, I'll quickly tell the functionality कि how it will work. एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है जहाँ पे हम डिपॉजिट सेंटर बनाएंगे। वहाँ 4 ड्रम्स होंगे सेग्रीगेट वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए।
हमारा स्टाफ मेंबर होगा यानी कि कलेक्टर, उसके पास डिवाइस होगी जिसमें हमारी ऐप होगी. जब यूजर आएगा वो हमें वेस्ट देगा, लाइक टिन हो सकता है, टेट्रा पैक, प्लास्टिक, जो भी वेस्ट देगा उसके अकॉर्डिंगली जितना भी वो उसको हैंड ओवर करेगा उसके अकाउंट में हमारा कलेक्टर उस चीज को एंटर कर देगा और फिर उसके पॉइंट्स यूजर के पास ऐड हो जाएंगे. पॉइंट सिस्टम बनाने के लिए हमने रिसाइकलर से कोलैबोरेट किया है. उन्होंने हमें मुख्तलिफ मटेरियल की जो प्राइस कोड की हैं उसको सामने रखते हुए हमने अपना पॉइंट सिस्टम डेवलप किया है. लाइक 50% हम यूजर को एज अ रिवॉर्ड दे रहे हैं, 50% को हम वो कह रहे हैं कि हम इससे अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट और इन लॉन्ग टर्म जो है अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे. अभी एक इंस्टीट्यूट में बना रहे हैं और इसको हम जब फंक्शनल कर लेंगे तो फिर हम उसके बाद कुछ गेटेड कम्युनिटीज और दूसरे इंस्टीट्यूट्स को केटर करेंगे और इस तरह से फ्रेंचाइज बेस्ड सिस्टम पे ये एक्सपेंड हो सकता है. Very good. Jury members, would you like any clarifying questions you want to ask? सैयदा अफरीन, ये कोई इसका दो चीजें हैं, कंसेप्ट लुक्स गुड, कोई प्रॉपर बिजनेस प्लान या इसका कोई छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट करके आपने चेक किया है वर्किंग छोटे लेवल पे? जी बिल्कुल. पहले ये कराची यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेट हुआ था और वहीं पे जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है वहां पे 6 हफ्ते की हमने पायलट स्टडी की थी. अब ये जो है आईबीए के साथ जब पायलट स्टडी की थी उस वक्त एप्लीकेशन लॉन्च नहीं की थी. हमने मैनुअली इसका प्रोटोटाइप वर्क करके देखा था कि पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है. कंपोस्ट भी हमने बनाई, रिसाइकलर को हमने सेग्रीगेटेड वेस्ट भी दिया, सब कुछ हमने 6 हफ्ते तक करके देखा. अब हम एप्लीकेशन के साथ इसको दोबारा आईबीए के एक कैंपस में करने जा रहे हैं. अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन है मेरा कि आप ये जब सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट कर लेंगी तो इसको डिस्पोज ऑफ करने का क्या मैकेनिज्म आपने सोचा हुआ? जी बेसिकली हमारा एम ही ये है कि हम डिस्पोज ऑफ करने वाला मटेरियल को कम से कम करें. जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको हम ग्रीन ड्रम में करेंगे उसके लिए हमने कंपोस्टिंग के लिए ऑलरेडी एनवायरमेंटल स्टडी सेंटर से कोलैबोरेशन किया हुआ है और वो उसको कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट में वो करेंगे. तो जो जितना भी गीला वेस्ट होता है या उसको ग्रीन वेस्ट भी कहते हैं या किचन वेस्ट भी कहते हैं, वो जो है बजाय इसके कि वो डंप किया जाए या उसको डिस्पोज किया जाए उसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए यूज करेंगे. प्लास्टिक, टेट्रा पैक, टिन वगैरह है उसके लिए हमने रिसाइकलर से ऑलरेडी जो बेस्ट प्राइस उन्होंने कोट की है उसमें हमने बात की हुई है कि हम उसको स्टोर करेंगे, जब ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो हम उनको सेल करेंगे और उसके लिए उनसे हमारा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. उन्होंने हमें प्राइजेस कोट की हैं, उसी के बुनियाद पे हमने अपना पॉइंट सिस्टम डेवलप किया है. छोटे छोटे जवाब दिया करो जरा. अच्छा और कोई सवाल? अच्छा अफशीन बेटा ये बताओ कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, कराची से या किसी और शहर से? जी कराची से. इसकी पायलट स्टडी भी कराची यूनिवर्सिटी में हुई है और अब आईबीए ही में हमारे बनाना है. ओके बस आप मुख्तसर बताएं, छोटा सा मुख्तसर बताएं, हमारे सवाल ज्यादा करेंगे. ये बताओ कि कराची में इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है, ये प्रोजेक्ट 2-3 लोगों ने और भी स्टार्ट किए हैं, कुछ लोगों ने ऑटोमेटिक मशीनें भी बनाई है यहाँ एनईडी से. तो ये बताएं कि आप क्या इस काबिल होंगे, आपका ये प्लान इतना स्ट्रॉन्ग है कि कराची के किस एरिया से को कवर करेंगी, आया सारा कराची या कम, और कितने अरसे में कवर करोगे? हमारा फोकस स्टार्टिंग में सिर्फ गेटेड कम्युनिटीज और इंस्टीट्यूट्स पे है क्योंकि जितने पायलट स्टडी करने में सारे चैलेंजेस को फोकस किया है. अभी हम बाहर नहीं निकलेंगे, सिर्फ गेटेड कम्युनिटीज और इंस्टीट्यूट में ही करेंगे जो इटसेल्फ बहुत बड़ी मार्केट है. उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेज पे देखेंगे कि हम बाहर जाएं तो हम कोलैबोरेट करके जाएंगे. आपके प्रोजेक्ट का वॉल्यूम क्या होगा और आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? हमारा अभी ये एक्सपेक्टेशन है कि हम पहले इंस्टीट्यूट्स में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इसको सेटअप कर दें क्योंकि वहां जो बच्चे आएंगे वो ऑलरेडी जब घरों को जाएंगे तो हमारे एक तरह से एजेंट तैयार हो जाएंगे, एक बिहेवियर चेंज आ जाएगा. फिर हम गेटेड कम्युनिटीज में जाएंगे तो उससे ऑलरेडी मतलब काफी 30% तकरीबन जो कराची की पॉपुलेशन है वो गेटेड कम्युनिटीज में और हाउसिंग सोसाइटीज में, उसको हम फर्स्टली पहले लेवल पे कैटर करना चाहेंगे. अच्छा आपको कराची के माहौल का भी पता है, आपने बात की है कल्चर की, क्या आप कराची के लोगों को कन्विंस कर सकोगी, वो माइंडसेट और वो कल्चर ला सकोगी कि वो डेवलप मुल्कों की तरह सेग्रीगेट कर दे और आपको वो जो आउटकम है वो मिल जाए? बेसिकली मेरी फील्ड ही कम्युनिकेशन की है. मैं इसमें एज अ वेस्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट नहीं काम कर रही, बल्कि मैं मास कम्युनिकेशन की ही स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ. तो मेरा काम ही बेसिकली लोगों को कम्युनिकेट करना, उनसे करना है. और अभी तक जितना भी मैंने इसमें काम किया है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह आया है लोगों का. तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. We have about 30 seconds left. Any last comment? Rafiq Rahman Saab is asking about the stage of the startup Catch the Crash. What stage they are on?
हमारी जो एप्लीकेशन है तकरीबन 50% काम उस पे हो गया है। विद इन अ मंथ और 2 हम उसको लॉन्च करके अपना डेवलप पहला डिपॉजिट सेंटर इंशाल्लाह सितंबर के एंड तक हमारी डेडलाइन है कि हम उसको लॉन्च कर देंगे। Very good. That brings us. Thank you, Afshin, for Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Remember, guys, everybody, that we are judges in all of the audience. We like you to rank these 10 teams. You're going to hear from 10 teams. Rank them in a couple of categories, such as the one which had the best presentation, the one which is more fundable, and if you want to actually put some money in, then contact Hassan or Shazana for that. We are ready for the next team, and I will share the video, and hopefully we have Shana ready. जफर साहब, आई एम सॉरी, मैं अगर थोड़ा हमारा हेल्प कर दें। दी जेंटलमैन जो प्रेजेंटेशन करे, अगर अपना डिसिप्लिन और अपने डिग्री के या क्वालिफिकेशन के बारे में बताए। वी आर इंटरेस्टेड विद द इंजीनियर्स जो I know you are, but you are not the only stakeholder. There are other stakeholders who care about making money, so we have to do both. So since time is tight, I will say, and we can ask that question in the text message. You know, okay. I'm an engineer too, but I also like to make money. So it's more complicated than just being an engineer. Prevention is better than cure. And for healthcare, preventing future illnesses and medical complications. And this is particularly true for sepsis, which is the leading cause of death in hospitals. Hey there, this is Shanul Haq, co-founder and CTO of ExpertFlow, which is a medical technology startup working in the preventive healthcare space. So sepsis is the body's extreme response to an infection, and it creates a huge clinical and economic problem for every healthcare provider across the globe. And early detection and subsequent treatment of sepsis is the only way to address this problem, according to the NHS. So after extensive research, we have developed a software called Deepnostics, an AI-powered clinical tool to predict sepsis before the onset. Now, Deepnostics works by acquiring patient data from existing electronic health records using our API, such that the model gives you a prediction for sepsis 6 hours ahead of time with high accuracy. And Deepnostics platform will house an RPM module inside it as well, which will be complemented by our wearable biosensor to collect vital signs seamlessly. And reliance on non-invasive data and federated learning of the AI model is what makes our technology stand out. Now, we have 1 pilot in execution in Pakistan, 2 more have signed, and 5 are in pipeline. Also, the co-founding team includes Rashid Hamid, Siaf Heather, and myself, with diverse backgrounds in healthcare and cutting-edge technologies, making ExpertFlow the right team to execute this venture. And because of this, we have had our fair share of achievements, some of which include being able to raise our pre-seed round from international VC firm. We were given an award by the President of Pakistan, Arif Alvi, as a top startup at MCAI, and deemed as the most innovative solution in the Latin market by the top 10 accelerator startup Chile. Aspire Pakistan has been extremely helpful by providing us subject matter experts who have helped us in streamlining our business model and outreach. So let's join hands to revolutionize healthcare and let ExpertFlow save millions of lives. Thank you. All right, ExpertFlow is, Shan is not available, but Sayaf is here. Sayaf, do you want to say a few words, fill in the gaps? Yes, sure. Hey guys, this is Sayaf, founder and chief operating officer of ExpertFlow. ExpertFlow is basically a prognostic company assisting healthcare professionals to make timely decisions for a patient. Okay. Continue. Is it okay? Take. Yeah. Sure. Thanks. So our solution is an AI-powered decision support system which works off a robust proprietary algorithm. It offers a 6-hour look ahead into a patient health and therefore potentially saving lives. So I myself having an electrical engineering, having masters in electrical engineering and having 5 years of professional experience in the domain of computer networks and security. So I'm open for the questions. If Very good. Jury members, please ask away. So how long company is in the market, and how much amount you are looking for further expansion? So we are working in this domain for last 2 years, and we are looking for 700,000 USD to make the pilot project completion. $700,000 USD. G.
$7 lakh. So if nobody else has question, tell us, do you have any revenue today? I have a question, just a very quick one. We have another startup called C Vitals, which basically has got a device to get the vitals without touching without contact. And would you be interested in actually exploring the possibility of a collaboration between you and C Vitals? Yes. Thank you, Hassan. We are definitely open for the collaboration. If there is some party who is working together, we are open to innovate this industry. And for the name Surface Up, for your question, so right now we are not in a revenue stage, so we are deep tech startup, so having pilot stage running on. I think one of the question will be if you can only get 50,000 USD or 100,000, उसमें कुछ क्या कर सकते हैं, किस stage तक जा सकते हैं, उसके बारे में सोचें जरा. But let's give chance to other people to ask questions. Yeah. Yes. Okay, so there is one question in chat room. Mrs. Rafiq Rahman is asking, everyone says they use AI. What is unique about your use of AI? Yes, very good question. So we are working in AI in the healthcare industry. Actually, predicting diseases is something I think saving lives. So अगर हम diseases को predict कर लें तो काफी ज़्यादा हम बीमारियों को होने से पहले लोगों को आगाह कर सकते हैं और काफी लोगों की जान इससे बच सकती है. तो AI का एक यूज केस है जिसको हम effective utilization कर रहे हैं healthcare के अंदर. So yes, it's true that everywhere everyone is using AI because it have a lot of potential in every industry. So what's your pricing model? 1 minute, Anwar, go ahead. Yeah, what's your pricing model for patient or consumer? So we are right now B2B business model है जिसके अंदर हम hospitals को charge कर रहे हैं one time integration fees के साथ और the hospitals को जो हमारी charging model है उसके अंदर $1,000 for 100 patient monitoring है. सही. और हार्डवेयर डिवाइस अब उसकी क्या कॉस्ट होगी टू द हॉस्पिटल? हमारे दो मॉडल्स हैं, दो सॉल्यूशंस है. एक सॉल्यूशन है हार्डवेयर के बगैर भी आप यूज कर सकते हैं. अगर आपके हॉस्पिटल में EHR सिस्टम ऑलरेडी डिप्लॉयड है तो यू डू नॉट नीड टू इंटीग्रेट एनी एनवेयर और एनी सॉर्ट ऑफ वेरिएबल सेंसर. सो हम एक API आपको प्रोवाइड करेंगे और यू कैन गो अहेड. और अगर हॉस्पिटल इतना वेल इक्विप्ड नहीं है तो हमने एक एनवेयर डिजाइन की है. बेसिकली वो एक वेरिएबल सेंसर है जो 7 वाइटल साइंस को लेकर करता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है अर्ली प्रेडिक्शन ऑफ द डिजीजेस. जो 51 predictions of diseases को open करते हैं domain. We have 20 seconds left. Raza, you gonna say something? Yeah, just a quick question from Minnesota. I have invested in a company out of Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, and if you folks connect with me, I can connect you with them because the product they have is a sepsis management system. Basically, patients that have. चलें आप exchange कर लें रजा के साथ. This looks like a good connection. So Raza may be helpful to you. We're going to move on to the next team, which is D Bargan and Mansoor Osmani, and I'm going to play their video. So let's do that. My name is Mansoor Osmani. I've been engaged with information technology over 2 decades. Providing innovative solutions to information technology problem is my passion. Although e-commerce is an exponentially growing market, it has a huge problem. The problem is of low conversion rate. Digital bargain is a solution to this problem. Yes, Digital Bargain is an API or plugin that is going to be available on major e-commerce platforms like WooCommerce, Shopify, and Magento within next few weeks. Digital Bargain utilizes artificial intelligence algorithms to allow buyers to purchase a product on a price that is favorable for them or a price that they would like to pay rather than the price that is on the website. This solution has been developed in partnership with Cloud Primero. Cloud Primero
has extensive experience in developing artificial intelligence solutions. Aspire Pakistan is also helping Digital Bargain or D-Bargain. Mr. Muhammad Anwar Khan, who is the founder of Aspire Pakistan and president of Pak 100, is mentoring D-Bargain. He is also an investor in D-Bargain. Aspire Pakistan has also provided G. Shah as a technology expert for Digital Bargain. My message to all young entrepreneurs and innovators is to work with Aspire Pakistan to bring their wonderful ideas to reality. All right, we starting the timer. Mansoor Saab is gonna address the crowd for anything we should have been mentioned. Certainly, thank you very much, Naeem Saab. Hello, everyone from Toronto. I'm a computer science graduate from McGill, from Concordia University in Montreal, and I've done my post-graduation from McGill, all in Montreal. I'm here to answer your questions. Basically, what I have just told you on the video, just a couple of things I want to add to it. Currently, there are over 26 million websites across the globe, and about 10 million of them is in our target market, USA, UK, and Canada. We are focusing only on two major platforms, which is Shopify and WooCommerce, and we're trying to do very focused marketing. The product is going to be ready within 3 weeks' time, and we will market it into these focused platforms in these focused geographies. And we're hoping that in the next couple of months, we will have a good base of beta testers or beta customers that we will then improve the product and go for massive marketing around Christmas time. Well, Mansoor, let's go to the jury, see what questions do they have. Sure, please go ahead. Yeah, no question from my side. Okay. Engineer Vyasat Ali Saab, aapka kya kar rahe hain? No question from my side. Because he's not an engineer, that's why? No, you see, we By have the way, our own... naam dal diya engineer, maine kaha he's an engineer. I'm an engineer. My degree is from the Department of Computer Engineering. Anwar, do you want to Actually, I think it's not the reason engineer or not engineer, because this is a big project. It doesn't come under, Pakistan Engineering Council's actually whatever domain it is. We are thinking of, small support, something like that. It's quite Anwar, good project. Yeah. You may want to mention the business model just here a quick question, Mansoor. I think that you very soon you will hear that. Yeah. I think if you could just a little bit explain the AI part of it. Excellent question, Malik. Previous ones also, everybody's saying AI. Basically, what we are doing in D-Bargain is we are going to use the buyer's behavior data and the product price data from other stores that are selling the same product at the same time, and come up, and of course, the requirement that the seller has for the margin brand, bandwidth. So we're going to use this data, to come up with the ultimate price that will give the margin that the buyer is looking for and give the product or sell the product to the buyer for which he is willing to pay, for a price that he is willing to pay. So that's where the artificial intelligence will be used in the big data, going across the board to see where this product is sold and how much it is sold. Mansoor, just hold on, because a short answer, please, because lots of questions are coming in. So what is the business model and what investment do you need? Let's address those two comments. Sure. We are going to be charging a small entry fees for downloading. And use then real numbers. Small doesn't mean anything. $20. Yeah, say the number. $20, names up, $20 US to download the plugin onto your e-commerce website. And then based on the amount of sales made using the D-Bargain, we will be charging an amount every month. So from up to $5,000 of sales, we will charge $5 per month. Up to $15,000 sales, we will charge $10, and so on. And other question about what do you need from us, and what percent of the company are you willing to give?
Okay. The second question's answer will depend on where will be the valuation will be at the time the money is needed. The money will be needed in about 3 months' time from now, roughly, and we are looking for $250,000 to expand the marketing activities into the target geography and target platforms, Shopify and WooCommerce. Excellent. Anybody else has a question? Because last question. I have a question. Zafar Saab, I have a question. Go. Okay, Mansoor Saab, will you be ready to integrate and collaborate with other group of people? Because I have some people in my contact, they are also startup and they also have almost the same. Would you be ready to join hand with them? Why not? Exploration of any merger is always in the cards for any startup. So yes, if there is someone, we've done extensive competitive analysis and we are continuing to do that. All right. Okay, that's good. Time is up. We are to the next startup. This is about Nano Detector, and Anam is here. Anam, let's play your video. Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Anam currently working as an assistant professor in the Department of Forensic Sciences at University of Health Sciences, Lahore. If I talk about the medical industry of Pakistan, specifically with reference to the diagnostic procedures, then these procedures are highly expensive, required expert person and expensive equipments. And an ingenious idea is this: when any pathogens enter in a human body, there are some kind of physiochemical changes. If we will be able to detect those changes at an early stage, we can increase the survival rate. Here at Department of Forensic Sciences, we are working on the development of nanomaterials which can be used for the detection of these physiochemical changes, and later we use these nanomaterials on the development of lateral flow strips. These strips are able to detect any disease at an early stage with a cost-effective manner and on spot testing. And due to the development of color line, any lay person will be able to read out the result. If we compare this method with the conventional methods like PCR and ELISA, then this method is cost effective and even a layperson is able to read out the results. No pre-sample processing is required for that. And if I talk about myself, then I have participated 2 times in the National Incubation Center, Hepatitis C Hackathon and the Agricultural Hackathon. We got the money from there. Then I have participated in the National Idea Bank on the basis of Nano Detector's idea. We have also participated in the Taxonomy Challenge, which was organized by the British Council, and we got money from there. And nowadays we are working on the detection of hepatitis C, and we have developed such kind of devices which can be used for the detection of hepatitis C at an early stage. And for Aspire, I would like to say it's a really good initiative to support such kind of ideas which can bring a change, which can bring a positive change. Thank you so much. Okay, let's stop that. Let's bring here Anam. Anam, if nothing else, you should learn from this experience. There's something, use of a pause. Assalamu alaikum everyone. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Because if you learn to pause, okay. You'll be heard much more easily by people. So you have to learn the power of the pause. Please go ahead and explain what we should know. Okay. Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Alam Munawar, currently working as an assistant professor in the Department of Forensic Sciences at University of Health Sciences, Lahore. Focus on that. Okay, we are working on the fabrication of nanomaterials, and these nanomaterials used for the detection of different kind of analytes. Analytes like hepatitis C, right? Till now we have worked with the hepatitis C. Next, we are trying to move towards the cancer detection. Actually, the idea is... Actually, the time is short, sir. I know, but if you say like this, nobody understands anything. It's total waste of your time and our time. What's the point? Okay. Okay. The idea is this: when any pathogens enter in a human body, there are some kind of physiochemical changes. If we will be able to detect those changes at an early stage, we can detect any disease. No, hold on. You're going unnecessary thing. What's the accuracy? What stage is the company? How much money do you need? Answer those 3 questions. Okay, so we need 3.5 million PKRs, Pakistani rupees, and we are at the stage of like we have developed all the things, but we don't have the setup to develop those portable devices. We are working on the fabrication of portable devices. Until and unless we will be able to make such kind of devices, we will not bring those devices into the market. We have worked with the Allied Hospital. We collect real samples from there,
and use those devices for that purpose, and for the Karshi industries as well. But we don't have the setup to bring these devices to make at a large scale. Okay. Any questions from the jury? Umair, I know you have a question. Let's see if anybody else does. Can I ask Zafar Saab? Ji, bilkul. Anam, does it need the regulatory approval? And what is the standard, and who will certify your product? Because I'm ready to finance or to sponsor your product, but I need the standard certification and regulatory approval clearance. A clear idea about this in very short. Okay, sir. It's like this, that it works just like the portable devices. For this devices to bring into the market, we don't need such kind of certification for that. But before bringing that device into the market, we have to set up our own parameters like sensitivity, selectivities. ये parameters हमें खुद set up करने पड़ते हैं. We have already done these set up these parameters. हम इनको devices को already जो है वो हम इसके ऊपर study कर चुके हैं. For hepatitis C, now we are moving towards the cancer. Cancer, we heard that. That is yours. Yeah. Guys, that is your standard against your standard. I'm ready to buy this product and sponsor you, but I will discuss with you later on. I think this is very short. जी, वन कर थोड़ा सा जी. उमैर, आपने कुछ कहना था? Malik Umair? Okay, Malik Umair is confused. So Hasan Saab, you go ahead. अच्छा जी, first of all, Anam, माशाल्लाह, very good, well done. जो आप कर रही हैं, that's just amazing. इसके अंदर जो एक्यूरेसी का क्वेश्चन था, जो आपने हेपेटाइटिस सी के ऊपर आपने जैसे कहा कि हमने सैंपल्स लेके किया, तो उसमें आपकी क्या एक्यूरेसी थी? सर, इट्स लाइक दिस, ये आपको यस और नो में आंसर दे रहा है. हम जो राइट नाउ हम हेपेटाइटिस सी के लिए हम जो हेपेटाइटिस सी के लिए क्लेम कर रहे हैं, दैट इज अबाउट 98%. हम लोगों ने रियल सैम्पलिंग एप्लीकेशन भी की हुई है for that as well. Advice for you, that should be in your slide. This should be the first thing coming out of your mouth. This is amazing. I mean, 98% accuracy, you should be shouting. Exactly. We have to extract it out of you with so much difficulty. आपका कौन है mentor? इससे बात करनी पड़ेगी. यार अनवर मदद कर यार बचे ये अनम की. Inshallah. I think that's it's amazing what you can do. Just one question is for a test strip, how much would it cost to the consumer? Okay, for consumer it will be like this. For manufacturer, if I talk about that, then at massive scale it will cost around about 10 to 12 rupees Pakistani, and it's up to us that how much we are going to cost for that. Excellent. I think that's it really can be widely distributed, and consumers, they can use it and to determine the plus point is this, that no doubt there are already many devices are available in the market, but that are based on the antibodies. जो manufacturer है उसको antibodies raise करनी पड़ती हैं, और raise करने के लिए उसको कोई ना कोई lab animal use करना पड़ता है. Here we are manufacturing the nano materials which act just like antibodies. वो antibodies की तरह act करते हैं, हमें कोई lab animal, कोई model ऐसा use नहीं करना पड़ता. Okay, we have a few seconds left. Any last comments or questions? Do you have any other team members with you, or you are alone? You did not take. No, we have a whole department in that. We have collaboration with National Institute for Biotechnology and Genetic Engineering. आप कंपनी में अकेली हैं क्या कुछ और भी हैं? No. It's like this, that we have 10 members at there, and I have provided the. You're talking about department. Department is not a company. We don't invest in department. We invest in companies. Company में कितने लोग हैं? Those are based on those. My answer to my question is an integer. मेरे ख्याल में इनकी कंपनी अभी बनी नहीं है. It's not a registered company. It's not a registered company. Registered, I don't care about. कंपनी में एक लोग है. अगर आप अकेली काम कर रहे हो तो have a very different answer. आपके पास 6 लोग हैं, have a different answer. No. It's not like this that we are working on the based on one member. I have a whole team and I have given the information. चलें, but guys, we have a link in the chat. You can put comments there. You can collaborate with the company. I mean, you're doing interesting things, so that use the link in the chat to connect with the company. We're moving to the next company, which is called Harkam. So I'm going to share the video of Harkam, and you should be able to watch. This is Khurram, and I'm founder and CEO of Harkam.com.
Harkam is Pakistan's first bidding platform to outsource your daily task. It started from my own real problem and pain point when I was looking for some resource to help me on the SEO and marketing side of it. And the quotations I was getting was out of my budget, and I was not able to, pay that much amount. So I was thinking, why not we can actually build up on a platform so people can actually post their desired task on their desired budget and desired time, and someone from the tasker community and the skilled professional people can actually offer them their services, and they can earn an extra money as well. So Harkam comes into the position, and that started in last like 2018 when I actually started my low fidelity wireframes, went through the various research and find it out that it's a real pain problem for every user in Pakistan, and we are on the pre-revenue stage already. In terms of our achievements, we are actually already participating in various tech summits like Future Fest. We was in Back Gallery Summit. We went through various different job fairs already, which was part of IBA and ICRA University to interact with the direct customers, to presented the Harkam and their features and the actual functionality and how they can actually beneficial from overall Harkam product. It is a great opportunity for us on this platform as well, on Aspire Pakistan, to allowing us to present it in the showcase, and I think it's a great platform to actually present the product like Harkam and other products to present it in front of a broader audience. If you are a mentor, if you are an entrepreneur, I think I would recommend the Aspire Pakistan have that great potential and great network to be a part of. Thank you very much, and looking forward to seeing you all. Bye-bye. Excellent. Let's bring up Khurram. Khurram, do you want to explain anything which should have been explained? Ji, Assalamu alaikum. This is me, Khurram. I'm a founder and CEO of the Harkam. 3 से 4 चीजें which I was thinking to be added into the video. Firstly, we already launched in December 2021. When we said like we are on a pre-revenue stage, so we have more than 5,000 registered tasker community and poster community on the platform right now. Or we have done more than 200 tasks completed on Harkam platform. In terms of our current thing, we can say that like we are in running position right now with the different various MOU signed with the PAFLA, which is a Pakistan Freelance Association, which is registered with the 70,000 freelancers, and they are coming on board with Harkam. And plus there is a Hunar, which is more toward the blue collar job professionals. They are also participating in terms of Harkam as a tasker force. And that's the community we are building on the Harkam. We are bridging between the poster and tasker. And that's the only thing we can say that to be uplift and powering the gig economy in Pakistan. And that will help to grow not only individual to earn extra income, as well as the people who are looking for to get their task done on the desired budget. It will allow them to save money and do their task easily on the desired time and budget. Very good. Let's go to questions from the jury. It's not jury, then anybody can ask the question. How many tasks you are getting per day nowadays? As we just launched like 3 months back, so if you currently see that is more than 20 or 50 tasks comes every day. But because we just recently started in like 3-4 months back, we are anticipating it's going to be grow more than 1,000, because we are having a collaboration with the PAFLA and other like Hunar. So people are actually start using the app. And when I say 5,000 registered user, that's allowing us to be getting more and more in the future. All right. खुरम साहब, ये बताएं कि आप मेजर सेक्टर कौन सा है जिसमें आप अपना वर्क कर रहे हैं, या आपका नाम तो वैसे हर काम है, लेकिन मेजर कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके पास आपकी जो मसलन आपने 5,000 आपके पास वर्क्स हैं और 2,000 के, तो कौन से सेक्टर में आपने ज्यादा काम किया? देखिए जी, हर काम के जो एक्चुअल में कोर वैल्यू है वो हर काम ही है, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है. इट्स मोर टुवर्ड द स्किल्ड एंड all the blue collar people as well. So in the current one, we can see that in the what we are currently helping, and we have done like 200 plus tasks we achieved. It's more toward the graphic design, SEO marketing, and people really need the restore at home.
So multiple different various tasks आए और we actually surprisingly did one more like 50 tasks from point A to point B. लोग जाना चाह रहे थे कि because we launched from Karachi right now and we are in process to be launched in the different cities like Lahore and Islamabad mainly. तो point A से point B तक लोगों ने जाने के लिए छोटे जवाब दिया गया ताकि आप और भी सवाल लोग कर सकें। लंबी कहानी सुनाते हैं हमेशा। अच्छा, पूछ रहे हैं लोग कितने पैसों की जरूरत है और क्या equity structure देना चाहते हैं? $1 million. We are looking for $1 million for this, and we will think about that. Like and on the current stage, we are going to go for a safe note, and we'll see evaluate on the first series. अच्छा, अरशद साहब, कोई क्वेश्चन आप कहना चाहते हैं? Actually, in the market there is already some startups like Karigari and others. What is the difference between your startup and others? Like Karigari, they already winner also. डिफरेंस ये है जी कि उनके पास जो है वो दे हैव देयर ओन टास्क फोर्स। वो करते क्या है कि उनके पास अपनी एक होती है जिसको वो अपने एज एम्प्लॉय करते हैं, बट वी आर नॉट पुटिंग एज, और उनकी कोटेशंस जाती हैं ऑन देयर ओन बजट्स, but what we are trying to give an independence to the person who is looking for to get their task done. So they have their control कि वो अपनी मर्जी से अपने टास्क का बजट डालेंगे, and that's not only for specific to blue collars, it will be anything. When we say हर काम, तो हर काम के लिहाज से कोई भी हो सकता है, from skilled professionals to the blue collars. Other questions from anybody? जी, खुरम, this is हसन सैयद। एक तो ये कि बहुत पहले जब ये क्राउड सोर्सिंग स्टार्ट हुई थी तो अमेज़ॉन ने मैकेनिकल टर्क के नाम से एक साइट स्टार्ट की थी, सिमिलर कॉन्सेप्ट लाइक हर काम। तो उसमें जो एक मैटर था दैट वाज बेसिकली काम खाली देना ही नहीं बल्कि हर काम को देने का एक तरीका होता है। मीन्स लाइक यू नीड सर्टेन इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म और इवन टू कोट ऑन अ स्पेसिफिक पीस ऑफ वर्क। तो हर काम के अंदर जो टास्क मतलब जब आप देते हैं या डालते हैं तो उसमें कोई कैटेगराइजेशंस हैं या इट इज जस्ट अ सिंपल टेक्स्ट वेयर यू जस्ट टाइप इन? Hassan, you may have to carry on one-on-one discussion. We are against time. ठीक है, कोई I can answer you Hassan on that. It's pretty different that space. Yeah, you need to explain that very quickly. What was it different in the next time when you do that, and also talk about unit economics. What is a typical task? How much do you charge? And what is the profit? That's the most important part of your presentation, which you didn't touch on. Koi baat nahi. Abhi seekh lo. Next time we do other things because there are other questions in the chat. Check them out. We are moving to next company, which is called Inventors, and I'm going to play Ali Abbas video. नाम मोहम्मद अली अब्बास है, मेरे स्टार्टअप का नाम इन्वेंटर्स है। मूवीज तो सब देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो झंझोड़ के रख देती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो मूवी ऑटिस्टिक बच्चों से रिलेटेड थी। अल्लाह ताला ने ऑटिस्टिक बच्चों को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, मगर सुनकर बहुत अफसोस होता है जब मालूम होता है कि पाकिस्तान में 1 मिलियन ऑटिस्टिक बच्चे मौजूद हैं और उनकी हमने मसाइल को सॉल्व करने के बजाय उनके प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए मैंने एक रोबोट तैयार कराया जिसका नाम पीको है, और इस रोबोट को ये रोबोट इन बच्चों की बोलचाल में और इनसे मिलने जुलने में हेल्प प्रोवाइड करता है। और अब मेरा ये मोटिव है कि मैं इस रोबोट को आगे लेके जाना चाहता हूँ और पाकिस्तान के जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको अपने रोबोट के जरिए इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। और मैं एस्पायर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने NIB के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसकी वजह से अब बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो हमारे रोबोट से फायदा हासिल करेंगे। शुक्रिया। Shaitan, very good. Ali Abbas is here, and yes, yes sir. बताओ। Okay. So मेरा स्टार्टअप एक अर्ली एज स्टार्टअप है और मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इस पर मैंने एक इनिशियल रिसर्च कंप्लीट करी और बाद में एक क्लिनिकल रिसर्च कंप्लीट करी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, जिसके बाद मैंने एक प्रोटोटाइप तैयार किया जो कि बच्चों की हेल्प आउट करता है। ये किस तरह हेल्प आउट करता है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है जो बच्चों से कम्युनिकेट करता है, उनसे सोशलाइज होता है, उनका अकेलापन दूर करता है और उनसे एक दोस्ती कर लेता है, जिससे ना सिर्फ बच्चे, उनके पेरेंट्स की लाइफ भी इजी हो जाती है। शुक्रिया। चलें, let's open for questions.
اچھا علی عباس آپ کیا فنڈنگ کتنی فنڈنگ چاہیے آپ کو مزید؟ جی $80,000. 18,000 80 اردو میں بول یار. 80,000 نہیں کر سکتے اپنے ذرا ماڈرن بننے کی کوشش کر رہے ہیں. $80,000 یہ آپ کمپنی کو کس اسٹیج میں لے جائے گی یہ؟ So sir, because of the company کو next level stage پہ لے جائے گی. Right now we are on early age startup. We are creating MVP. اچھا کمپنی میں کتنے لوگ ہیں؟ کمپنی میں 4 لوگ ہیں ابھی اور ایک ٹیم ہے میڈیکل جو کہ والنٹیئرلی کام کر رہی ہے ہمارے ساتھ. What is the pricing model and business model? How do you make money? اب $1,000 کا جو روبوٹ ہے ہم وہ مارکیٹ میں سیل آؤٹ کریں گے اپنے. پاکستان میں $1,000 کا روبوٹ لوگ لیں گے یہ امریکہ کے لیے؟ سوری سر, یہ پاکستان میں لوگ خرید سکیں گے $1,000 کا روبوٹ؟ یس سر, وی آر لوکنگ فار NGOs ایز ویل کہ وہ بھی اسپانسر کریں جو کہ ہمارے روبوٹ نہیں خرید سکتے, لیکن ہم انیشلی 20% کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں بیکاز 1 million cases are in the market and we are targeting 20% which is 200,000. اور سوال کسی اور سے؟ علی عباس آپ کا پروجیکٹ ابھی کس سٹیج پہ ہے؟ آئدر یہ ڈیولپمنٹ فیز پہ ہے, مینوفیکچرنگ فیز پہ ہے, اور اگر ڈیولپمنٹ میں تو ڈیولپمنٹ کے کس ماڈل پہ؟ جی سر, سر میں نے اس کا پروٹوٹائپ کریٹ کر لیا تھا, تو اب جو ریسرچ ہم نے کلینکل کری ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کر کے MVP تیار کر رہے ہیں, تو یہ ڈیولپمنٹ اسٹیج کے اندر. اچھا ڈیولپمنٹ کے کس سٹیج پہ؟ بیکاز ڈیولپمنٹ کے بھی دیکھیں جو سب سے زیادہ آپ کو پرابلم آئے گا جو آپ اس کی بات کریں کلینکل میں اور مینوفیکچرنگ میں. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ what about the safeties and regulatory approvals؟ جی سر بالکل, ہم نے اس کی سیفٹی کے اوپر بھی ابھی کام کرا ہے کہ بالکل جو ہے یہ بچوں کی اس کی شیپ اس طرح کی ہو کہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. سو ہماری ٹیم جو ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے اور ڈاکٹرز کی اپروول لیں گے کیونکہ ڈاکٹرز ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اس مشن کے اوپر. سیفٹیز کے کس اسٹینڈرڈ پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں عباس اس کے لیے آپ کو سیفٹی اسٹینڈرڈز چاہیے جو کہ آلریڈی اویلیبل ہے اس طرح کے ڈیوائسز کے لیے. وہ کون سے اسٹینڈرڈز ہیں اور اس کے بعد کلینکل ٹرائل کے لیے بھی آپ کو ضرورت پڑے گی, اس کا بھی مجھے تھوڑا سا بریف کریں. لاسٹ کوسچن ہے. جی سر, میں نے جو سر پروٹوٹائپ جو ٹیسٹ کیا ہے ایک سینٹر ہے کراچی میں IHRI سینٹر, تو میں نے ان بچوں کے اوپر ابھی انیشیلی ٹیسٹ کرا ہے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی ٹیم کے ساتھ. سو ریزلٹس آر ویری آؤٹ اسٹینڈنگ. I think the thing is you should talk to Riyasat Saab and find out کہ اور کیا آپ کی کیسی وہ مدد کر سکیں. So this should be your takeaway. وہ چٹنی سے یہ ریزلٹس کی انہوں نے بات کی تو اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے کس قسم کے ریزلٹس آپ نے اچیو کیے ہیں؟ یس سر, سو بیسیکلی سر روبوٹس بیسڈ انٹرونشنز تو بہت یوزفل ہیں. ہم نے جو اپلائی کرا ان کے اوپر کہ ہم نے بائی لنگول اس کے اندر لینگویج, جب ایک بچے کے تھرو روبوٹ سامنے آیا تو اس کا انٹرسٹ بہت زیادہ دیکھنے کے قابل تھا. ان کے اندر ایموشنز دکھائی دیے جو کہ ان کا مین ایشو ہوتا ہے کہ وہ ایموشنز لیس ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ لونلی رہتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی کرنے لگے بچے ان روبوٹ کے ساتھ. اس کو ہم نے کلاس روم کے اندر چیک کرا تو کافی سارے بچے جو ہیں روبوٹس کی طرف متوجہ ہوئے. روبوٹ کی تصویر دکھا دیتے تو ہم بھی محبت کر لیتے تھے کہ بڑا ہے, چھوٹا ہے, لمبا ہے, کیا ہے. تصویر تو نہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں. پچ ڈیک کے اندر اس کی تصویریں ہیں اینڈ مجھے شیئر بھی کرنی چاہیے تھی. آئی ایم سوری فار دیٹ. علی میرا کوشچن یہ ہے نا کہ آپ نے آرٹسٹک بچوں کے لیے بنایا ہے, تو جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے ریزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا, تو ان کے سامنے تو کوئی بھی اس طرح چمکتا دمکتا کھلونا بھی رکھ دے تو وہ خوشی کا اظہار لازمی کریں گے. تو مطلب ان کی کیور اور ان کی اس میں آپ نے کون سے ریزلٹس اچیو کیے ہیں؟ اس کو ایسا کر لیں کہ اس کو آپ سائڈ میں کنورسیشن کر لیں میرے خیال میں, کیونکہ یہ تو ایک کافی ڈسکشن اس کے لیے درکار ہے سیفٹی اسٹینڈرڈ پہ بھی. جی ٹائم ہو گیا ویسے, تو اس لیے سائڈ پہ کر لیں. وی آر the next company called BO Being and that's Ali Riaz and I'm going to play his video.
Bean is an eco-friendly food provider, which is biodiesel. Our product first time in Pakistan for a commercial sector to reduce global warming emissions and save for billions of dollars by less reliance on imported fossil fuel and generate huge employment to boost our economy. According to the World Air Quality Report, Pakistan is the second most polluted country in the world. Vehicles that operate in fossil fuel are the major source of air pollution. The burning of fossil fuel emit greenhouse gases emission and raise the Earth average temperature. The cooking oil we are using on our daily basis for food preparation is also a threat to the environment and causing produce harmful gases, contaminated soils, and polluted water supply. So BioBean is to collect waste cooking oil from restaurant, hotels, and household through our mobile application, which we have already launched beta version and convert into a biodiesel. Biodiesel is a versatile biofuel that is renewable, biodegradable, and environmental friendly, and its combustion adds only biogenic carbon into the atmosphere. And biodiesel can be used to power any diesel engine without any modification. So the total consumption of diesel in Pakistan is around 7.3 million ton per annum. The local production can meet 65% of the total demand, while the rest is being imported. So currently Pakistan has a capacity to produce 2,956 metric ton of biodiesel annually from waste cooking oil, and our company will require to capture 35% of the diesel market, which is now being imported by the foreign countries and save for billions of dollars. And if we offer a cheaper price, 200 rupees per liter, to compete against our current competitors, and we have a 25% profit margin, and we expect a 15% growth on an annual basis. So if you want to create a positive impact in our society, so please support us. Thank you. All right, let's invite Ali Riaz to tell us anything we should know. Okay, so basically my name is Ali Riaz. I did my bachelor in industrial engineering and management, and then I completed my MBA. And for continuous supply of our raw material, we have already collaborated with leading fast food chain in Pakistan, like McDonald's, KFC. They all are executive sales, they are waste cooking oil, and our target market is 2,000 small and medium enterprise. So they require diesel for their generators and the forklifter. So because we are a working professional, we have a huge team because we have our friend of working professional. So we have already communicated and collaborated with the industries for our product is a CSR program associated with the company. So that's it. That's good. Just hold on a second. I think this is good, but one of the questions, Rafiq Rahman sir were asking good questions. One of the question is, what is the cost of producing a 1 liter of biodiesel? It's around 175. कितना? 175 rupees. जिसमें हमारा 25%. पौने 2 रुपए? नहीं, पौने 2 नहीं, 175 rupees. यार तुम उर्दू बोला करो, ये क्या मार रहे थे, समझ नहीं आती क्या कह रहे हैं। 175 रुपए कह रहे हैं। 175 रुपए में हमारी कॉस्ट है, जिसको हम सेल आउट करेंगे 200 रुपीज। दूसरा सवाल ये है कि आप कितना पैसे रेज करना चाह रहे हैं और उसमें से क्या इक्विटी का स्ट्रक्चर? ओके सो वी नीड हमें जो चाहिए वो 4 मिलियन रुपीस चाहिए, क्योंकि हमें एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एमवीपी हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। हमें एक व्हीकल्स चाहिए कलेक्शंस के लिए, और हमें एक साइट चाहिए, प्रोडक्शन साइट, जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो सके। Let's open it up to other people. इसमें आपने गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन भी काफी आ जाते हैं कि टू प्रोड्यूस डीजल, उसको स्टोर करना, उसको सेल करना, तो इस पे कुछ किया है आपने? और कलेक्शन जो है कास्ट वो बहुत ज्यादा हो जाती है यूजुअली, अगर आप फूड चेन से कलेक्ट करेंगे उसकी कास्ट काफी बढ़ जाएगी। ओके सो फूड चेन्स जो कलेक्शन है उसके लिए हमने जो मॉडल वैल्यू प्रोपोजिशन हमारे मॉडल में ये है कि हमने बायो बीन के नाम से एक ऐप प्रोड्यूस करी, जिसमें से आम लोकल जो है इंडिविजुअल्स वो अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें करीम उबर ऑपरेट करती है, तो उनकी जो बैक साइड होती है, डिग्गी जो होती है, वो बेसिकली बैकएंड होती है, वो उसको यूटिलाइज नहीं करते क्योंकि वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो हमारा मॉडल ये है कि कोई भी इंडिविजुअल, आपके पास अगर व्हीकल्स है और आप अपनी व्हीकल्स को यूज करना चाह रहे हो, तो आप पिकअप करें अपने नियर बाय रेस्टोरेंट से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पे डिलीवर करते हैं, और हम आपको चार्जेस दे देंगे उसके बेसिस पे। तो ये मॉडल हमारा ऐसा है कि जिसमें से
मल्टीपल्स लोग अपनी कलेक्शंस करके डिलीवर कर सकते हैं, तो रिड्यूस कॉस्ट हो सकती है। और सेकंड जो चीज़ ये है कि क्योंकि हमारा मॉडल ऐसा है कि क्योंकि सस्टेनेबिलिटी पे फॉर फोकस है, तो मेरा ये कि क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो कि सस्टेनेबिलिटीज पे है लेकिन वो फिजिबल नहीं है वर्किंग करने पे, तो हमारा मॉडल ऐसा है क्योंकि जो कि प्रैक्टिकल है और ये इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड और यूज हो रहा है। अच्छा, ये लंबी कहानी दोबारा सुना रहे आप। जी जी लेट्स डू अदर थिंग। 175 रुपए का जो बेचते हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है? 25। आपकी कॉस्ट होगी वो कोई 120 125 रुपए की है और बेचते 175 की हो? नहीं, बेचते हम लोग 200 रुपीज का, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट तकरीबन 175 है। That's not a 25% margin. That's like a 10-12% margin. So you need to check your math here. अच्छा, any other question because we only have a few 1 minute left. अली रियाज, मेरा सवाल है, क्या ये 4 million is sufficient amount? Have you calculated properly? आप इतने इस प्रोजेक्ट के लिए 4 million, or you have another source of funding? Yes, we have already basically हमारे फ्रेंड फैमिली सर्कल से, और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो हमने अपने फ्रेंड से ऑलरेडी जनरेट करके जो हमारा प्रोटोटाइप है, जो हमारा MVP मॉडल है, वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर है। तो हमें सिर्फ साइट्स और एक व्हीकल्स चाहिए और एडिशनल फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज की सैलरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए जो फर्नीचर्स के लिए। तो हमने ऑलरेडी रफीक साहब कि 175 रुपए का जो आप बता रहे हो पर लीटर, ये कोई ऐसा प्लान है कि उससे कम हो जाए ताकि प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो जाए कि नहीं? अच्छा, ये कम इस वजह से हो सकता है कि अगर हमारे साथ जो फास्ट फूड चेन इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जो हम लोग परचेज कर रहे हैं कुकिंग वाइज वो भी फ्लक्चुएट कर रहा होता है सीजन वाइज, तो ये फास्ट फूड ऑलरेडी चेंज सेल आउट कर रही है 120 रुपीज में, तो हम उसी में इतना परचेज कर रहे हैं। तो अगर मेन सोर्स है हमें रिड्यूस मिलेगा तो हम कम कर सकते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि आपके इस प्रोडक्ट को सर्टिफाई कौन कर रहा है? बिकॉज विदाउट सर्टिफिकेशन आप एक जगह हाथ डाल रहे हैं विच इज वेरी सेंसिटिव। यस, इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो हमारे मेंटोर्स है वो ऑलरेडी बायोडीजल तो उनका PhD से यूनिवर्सिटीज में लैब्स में है, तो हमारा ऑलरेडी PCSI और इन सबसे हमने सर्टिफिकेशंस करा रही है कि अगर आपको कोई यूज नहीं होगा। और गवर्नमेंट के साथ भी हमारा यानी कि रिन्यूएबल हमारे मिनिस्टर्स थी, उनके साथ भी हमारी कोलैबोरेशन हुई थी, तो सर्टिफिकेशंस पे हमें कोई इश्यूज नहीं है। यार आपका टाइम इज अप, व्हाई डोंट यू कनेक्ट डायरेक्टली, बट यू नीड टू डबल चेक योर मैथ। अनवर शाह भी पूछ रहे हैं आपसे, उनसे कनेक्ट करो डायरेक्टली। आई एम गोना मूव ऑन टू माय सेकंड टू द लास्ट टीम। दो टीमें रह गई हैं, तो यू आर ऑलमोस्ट डन गाइस। सो EFG कंस्ट्रक्शन, Ayaz is to speak. Assalamu alaikum. My name is Engineer Ayam Raza. I was born and raised in Jeddah, Saudi Arabia, and I moved to Pakistan for my higher studies. I have graduated from Sir Syed University, Karachi, in civil engineering. Currently, we are facing two main problems. I have seen a lot of people having no option but to live in slum areas, portions, and small congested flats due to high rise of housing and construction. The construction industry of Pakistan is said to be 380 billion rupees. By utilizing or using new, modern, and sustainable techniques, we can reduce the cost of construction by 25 to 30%. That is 60 billion rupees per annum. Secondly, plastic waste. In 2020, around 4 million tons of plastic waste was generated in Pakistan. We have come up with a sustainable solution to use plastic waste as a building material. The solution is called bubble deck slab. The solution is to use plastic hollow balls during slab casting to reduce the dead weight of structure without compromising the durability of structure. Talking about achievements, my first achievement is the proof of my concept. Secondly, the idea being selected in several national and international competitions. From being selected in FISC, Futuristic Infrastructure Challenge, to being a city provisional and then a national level winner in National Idea Bank, and as well as many other minor competitions as well. The Overseas Pakistani helped me through Aspire Pakistan Pak 100 program by training me to be confident and helping us, or especially me, to realize the potential of my startup. Don't forget to join us at the Aspire Startup Showcasing. Thank you very much and hope to see you at the showcasing. Allah Hafiz. All right, let's invite Ayan to talk to us. Hello, Assalamu alaikum. Okay. First of all, thank you everyone for watching and paying attention to my pitch video.
And I'm currently open to questions. If you have any questions, feel free to ask. Acha, let's open for questions, but I didn't understand, how do you understand the problem, don't understand your solution? Do you want to speak to that? Yeah, I and can some speak. unit economics, like what does it cost, what's the profit margin? Okay, so let's talk about my idea. First, my idea is called bubble deck slab. It is a method in which... Don't repeat, we heard all that. How does it do? What does it do? Okay, in simple words, it reduces your structure's weight. It reduces your cost, your time consuming, and etc. and everything. We have done research and we have found some results regarding that. About 25% reduction in concrete use and about 28% in steel reduction. All right, let's open it up to other jury members. Yes, please. Ayan, you have mentioned about the natural resources, use of natural resources. Are they so cheap? Are they available? Then, all other material is also one of the natural resources, I think, used in the construction. So I don't know which particular material you are talking about. Sir, I'm talking about plastic waste. Plastic waste like the plastic bottles, shampoos, bottles, etc. I'm using this and recycling them and converting them into hollow balls, and I'm replacing them in slabs, in cores and in the core of slabs. And by doing so, I'm reducing So its do you weight. need special equipment to do all that processing? No, sir. For casting and everything, I do not require any such machineries and everything. But for making the balls, yes, I do require some machinery for that. So at the moment, how much investment you are looking for? Sir, I'm looking for $100,000 for 10% in equity. Thank you. Please congratulate Ayan. He knows how to give short answers. Love that. Thanks. Ayan, just one question. You said you have done the proof of concept. Can you tell us the load factor and other variables? Any such variables which you have considered? Yes, actually we have done three things in our research. Number one, we compared the cost, as I have spoken before, about 25% to 30% reduction. And the next thing we did was to compare it for a normal slab. The result shown is that about only 98% is compared to a solid slab, only 2% in reduction. And the third thing we did was to compare it with after it's exposed to fire. Like what will happen after it's exposed to fire. These are three things we did. I do have the results. If you are interested in them, I am willing to share my results with you. The one question from these Anwar Shah only Saab. three factors? Sorry, if you can repeat the question. Ayan, did you consider only these three factors or some other factors also was under consideration? Yes, so there were other factors that I did consider regarding that, like the type of plastic I should use, the number of plastic, the weight of the ball, the projections of the ball, how should I place them, and etc. etc. There were many factors. I do have a list of all those factors with me. अच्छा, एक सवाल अनवर शाह साहब पूछ रहे हैं कि किस स्टेज पे है कंपनी आपकी, कितने लोग हैं, क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं? Okay, so we're a team of five people, including 2 PhDs, and we are currently just looking for some investments to start. I have registered for patent, and I'm currently waiting for my patent results as well as for my PEC numbers. As soon as we get my PEC numbers, I will, inshallah ta'ala, we will register our company and start our business. I do have some potential clients. I have spoken with them, and they are very interested in my idea. And one question is coming from Ahmed, is that environmental impact, is it? Yes, it is environmental friendly. Yes, it is environmental friendly, as we are reducing the usage of concrete. So concrete, and we have cement, sand, and crush, as well as water. So we are reducing. I think you have to look about the safety as well. It's a plastic and fireproof and all those factors. Yes, as I have spoken, that I have did research on it, and as I have told you that I have compared it to a conventional slab, and I did also share my result with it at 98%. Ayan, can you please tell me that is it for a small single-story building or for high-rise also? What's the strength of this material? Sir, I have told you about the strength that is compared to solid slab, it is 98%. As for your first question, the higher the building, the calculation that we have done, the higher your building is, the more profitable it is.
Hello, thank you, Ayan. Good job. We are moving on to the very last team of the day, and that's called Calorie Hacker. And Latifullah is going to speak to. मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ. मेरे स्टार्टअप का नाम है कैलोरी हैकर पाकिस्तान. सबसे पहले मैं एस्पायर पाकिस्तान का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्टार्टअप को इंट्रोड्यूस करवा सकें. सेहत हर इंसान का बुनियादी हक है. जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद इंसान ही माशरे का कारआमद शहरी बन सकता है, मगर पाकिस्तान में हर शहरी बिलखुसूस बच्चों और औरतों को ये हक नहीं मिलता. पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन की शक्ल में एक संगीन ग़िज़ाई मसला दरपेश है, जिसके मुताबिक बच्चों के कद का कम रह जाना यानी स्टंटिंग 38% है, अंडरवेट बच्चों की तादाद 40% है और एनीमिया यानी खून में कमी के शिकार बच्चों की तादाद 52% यानी आधे से ज़्यादा बच्चे खून में कमी का शिकार हैं. और इस चीज़ की इब्तिदा सबसे पहले आप स्कूल के लेवल पे न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करके कर सकते हैं. कैलोरी हैकर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं और मेरी टीम पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन और फिज़िकल कंसल्टेशन के ज़रिए ग़िज़ाइयत के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, गुर्दों की बीमारियाँ, कैंसर, डाइट्स और इस तरह की मुख्तलिफ़ ग़िज़ाइयत से रिलेटेड बीमारियों के हवाले से कंसल्टेशन देती हैं. और उसमें डिज़र्विंग लोगों को हम लोग फ्री कंसल्टेशन देते हैं, जबकि जनरल पब्लिक के लिए बहुत मुनासिब चार्ज के साथ हम ऑनलाइन और फिज़िकल कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं. एस्पायर पाकिस्तान के हम एक दफ़ा फिर मशहूर हैं कि उन्होंने हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का एक मौका दिया. अगर आप मेंटोर हैं तो आप आइए, एस्पायर पाकिस्तान का हिस्सा बनिए और उनके साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करें. और अगर आपका स्टार्टअप है कोई तो आपको हम खुशामदीद कहने का आप एस्पायर पाकिस्तान के सेटअप में अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करवाएं और वहाँ पे आप इस कंपटीशन में हिस्सा लें. थैंक यू. All right, Dr. Latifullah is here, I think, and maybe he can tell us a little bit about. Are you a Yes, sir. company, or a product company? अपने मुखड़ा भी दिखाएं और बात भी करें. जी, अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा नाम डॉक्टर लतीफ़ खटक है. मेरा ये प्लेटफॉर्म है कैलोरी हैकर्स. बेसिकली फिजिकली इसका स्टार्टअप लिया है मैंने वाकएंड से. इसके अलावा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हम पूरे पाकिस्तान पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम कंसल्टेशंस और न्यूट्रिशनल एडवाइसेस देते हैं. तो इसमें ये कि पाकिस्तान में जैसे मैंने अपने वीडियो में भी शेयर किया, मेल न्यूट्रिशन के शक्ल में स्टंटिंग के नाम पे एक बहुत बड़ा इशू है जो कि 50% से ज्यादा बच्चों में चीज पाई जाती है. वो रिपीट है ना, वो सब चीजें आप बता चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है. ये बताओगे. Hold on. Let me ask a question. How do you make money? Let's focus on that. How do you make money? What do you charge? How much? ओके सर, हम इसमें ये करते हैं सर कि कंसल्टेशन चार्ज करते हैं, कंसल्टेशन फी चार्ज करते हैं. उसमें हम 10 रुपए में, 1000 रुपए में, किधर यूज द नंबर्स इन योर सेंटेंस. 1000 रुपीज पर कंसल्टेशन चार्ज करते हैं. जब उनको डाइट प्लान्स देते हैं, डाइट कंसल्टेशन, उसके पर 5000 चार्ज करते हैं. तो हमारी टीम में इस वक्त 7 बंदे हम. उसमें 4 जो है वो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं, हम सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और 2 बंदे एमफिल एजुकेशन के, और 1 बंदा जो हमारा कंप्यूटर एक्सपर्ट है. Very good. तो हमारा जो got it. Thank you. Let's open it up to jury members to see what other question they have. If nobody from jury will ask, then I will ask. Okay, sir. Okay. Jury, come on, jury guys. Don't disappoint us now. Now we will not disappoint you, Zafar Saab. हम evaluate करते हैं बहुत डेप्थ में, और बाद में भी इनसे कांटेक्ट करेंगे. They needs lot of counseling and lot of other questions which is due to the short period of time we cannot ask. मुझे ये बताएं कि आपने 1000 रुपीज कंसल्टेशन फी कर रहे हैं, तो इसमें सर्विसेज क्या क्या देते हैं? एक तो आप मेल न्यूट्रिशन का बताते हैं, और कैसे बताते हैं, किस तरह बताते हैं? yes. इसमें सर इनिशियली जो कंसल्टेशन है जिसमें 1000 हम चार्ज करते हैं, उसमें सिर्फ पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और उसको बेसिक जो गाइडलाइंस होती है उसके मसले के हवाले से कि उसको क्या इशू है. लाइक किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है, किसी के किडनीज का इशू है, या आपकी जो बच्चे हैं जिनको मेलनरिश्ड बच्चे हैं जिनको फोर्टिफाइड फूड की जरूरत है, उनको उनकी हिस्ट्री सुनते हैं, उनको कंसल्टेशन देते हैं. उसके बाद मैं आपको 1000 रुपया दिया, आपने मुझे क्या दिया? सिर्फ एडवाइस दी है या कुछ और भी दिया है? नहीं, उसकी पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री ली, उसको कुछ टेस्ट एडवाइस किए, मतलब उसका एक चेकअप टाइप हो गया है.
उस 1000 और फिर नेक्स्ट विजिट पे जब 1-2 दिन बाद उसमें हमने उसकी बेसिक चीजें नोट की, जैसे एज है, हाइट है, वेट है, इस तरह की चीजें, और कुछ उसको टेस्ट लिख दिए। फिर नेक्स्ट डे पे जब हम उसको बुलाते हैं उस पर हम फिर डाइट प्लान देते हैं। अच्छा, वो जो हम डाइट प्लान देते हैं उसके फिर हम अलग से 5000 चार्ज करते हैं। अच्छा, तो वो so that's the important time. We skipped over that one. We had to get it out of अच्छा, here. डॉक्टर खटक, ये बताए आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल है, वॉल्यूम इस वक्त कितना है, और सेकंड, मैं आपके पास क्यों आऊं जबकि ऑलरेडी न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारे मौजूद है और वो यही एडवाइस देते हैं और बहुत कम पैसों में देते हैं। बिल्कुल सर, इसमें ये है कि सर हमारा जो सेटअप है, हमारे पास मंथली 40 to 50 पेशेंट्स आ रहे हैं। तो हमारा जो इस वक्त सेटअप है वो तकरीबन 1 लाख से 1.5 के करीब है, और हम इसको चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो मेजर सिटीज है उसमें इसके ब्रांचेस हम लोग एक्सटेंड करें, और स्पेशली स्कूल लेवल पे हम इसको लेके जाना चाहते हैं, स्कूल न्यूट्रिशन पे काम करना चाहते हैं। नहीं, जबकि न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो मुझे 500 रुपए में देख लेता है, फिजिकल देख लेता है, और वो भी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है। व्हाई शुड आई कम टू यू? सर इसमें ये कि हम न्यूट्रिशनल कंसल्टेशन के डाइट प्लान के साथ साथ 100 डेज तक उसको फिर बैकअप भी देते हैं फ्री। उसको बैकअप में कोई कंसल्टेशन चाहते हैं या वो हमसे इंटरेक्ट करता है, बाद में भी हम उसको फिर सर्विसेज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये सर 1000 रुपीज में है? यस। बैकअप 100 डेज तक कंसल्टेशन? यस, 100 डेज। और कोई मखसूसियत है आपकी, कोई समथिंग अनयूजुअल आपके कंपनी के, आपकी डिफरेंशिएशन क्या है कि आप? सर हमारी डिफरेंशिएशन ये है कि सर एक तो हम 4 बंदे जो हमने एमएस किए हुए क्लिनिकल न्यूट्रिशन साइंसेज में। अच्छा। जो हमारे पास 2 बंदे उन्होंने एजुकेशन में, एक ने एक पीएचडी और एक ने एमफिल किया हुआ है। हमने बेसिकली उनको इसलिए लिया हुआ है कि हम स्कूल न्यूट्रिशन पे बेसिकली काम करना चाहते हैं कि वहाँ पे 40 बच्चों को न्यूट्रिएंट रिच डाइट मिले। इस चीज को हम इंटरवीन करना चाहते हैं ताकि 50%। अच्छा, आप क्या, what is your ask? What are you asking from this community? सर हमारा ये थिंकिंग है कि अगर हमें कोई 5 मिलियन रुपीस की कोई इन्वेस्टमेंट हो, हमारे साथ कोई सपोर्ट हो, तो फिर हम इसको पाकिस्तान की मेजर सिटीज में एस्टेब्लिश कर सकते हैं हमारे सेटअप को। आपने how many people, how many session have you completed so far? So far तकरीबन more than 500. 500, okay. चलें? Yes sir. Guys, we are at the end of our time and all 10 teams are present. There should be a link. If not, Shahnaz, can you put the link in the chat now so people can add their comment about which teams they liked, which team was their favorite, least favorite, also about some other feedback you want to give them and connect with them. Thank you for your attention. 90 people showed up, 73 stayed throughout. That's very impressive. I did not believe it. It's true. Parting thoughts के लिए I'm going to turn it over to Hassan to bring it to a close. अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू नईम। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप मुझे बुलाएंगे, बट होपफुली माय इंटरनेट कनेक्शन इज फाइन। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जर्नी है, और आई थिंक जितने भी सब लोगों ने इसके अंदर बिहाइंड द सीन काम किया है, टू ब्रिंग इट दिस फार, इट्स रियली रियली अमेजिंग। ये हमारा दूसरा शोकेस है। मई में हमने पहला किया था, और अब इंशाल्लाह 14 अगस्त को हमारा तीसरा शोकेस होगा, एंड 31 अगस्त को वी विल ब्रिंग ऑल द स्टार्टअप्स टुगेदर, अल्लाह ने चाहा तो। और ये ऑनलाइन भी है, तो लिहाजा लोग बाद में भी जा सकते हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इतनी देर तक रुके, पाकिस्तान 100, एस्पायर पाकिस्तान के तमाम मेंबर्स का, पीईसी का ख़ास तौर पे, उनकी ज्यूरी का, और नईम ज़फ़र का कि उन्होंने इसको मॉडरेट किया इतने अच्छे तरीके से, और शहजाना का, और जमीला का, यसरब का, और बिहाइंड द सीन इजहार का बहुत शुक्रिया। इन्होंने बड़ी मेहनत की है इस सारी चीज़ को जिस तरह हम देख रहे हैं, और पीछे जो हमारी वीडियो एडिटिंग की टीम है जिसमें अफनान भी हैं, और क्या कहते हैं अपना रायहा हैं, हमारी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं हदीसा, सब लोग माशाल्लाह इन्होंने इतनी मेहनत की है। तो आज हम ये देख रहे हैं, और आगे अल्लाह ने चाहा तो इससे भी बेहतर करेंगे। आप लोग बताएं कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। I want to also say last few words, because first of all, I'm impressed that people like Azam Arastu and Anwar Khan have stayed the whole time. These guys are, you have to go through 3 secretaries to talk to them normally. They're busy people, so that's good to see them. And jury members, thank you very much, Javed Iqbal and Bhavani, Dr. Bhavani Rasali. Thank you for your comments.
यार, सब बच्चों को मैं डांटता रहता हूँ क्योंकि they need help, but I'm so impressed that they have come this far with very little feedback and maybe guidance. So hopefully the members of this community can provide guidance, and all of you are bright, and we can polish your ideas over time. So feel free to reach out to Aspire 100, and all of us are giving our time. We get nothing for it, and this is our purpose in life, that give back a little bit back to our community. I'm very, very bullish in Pakistan long term. तो अभी जो छोटी मोटी उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, इंशाल्लाह लॉन्ग term vision is quite promising for Pakistan, and for one reason: manpower. Most economies, the population is declining, especially Europe and Japan. And Pakistan have a growing population, people who speak English, who are internet savvy, and they're willing to do. So the long-term vision, like 30-year vision, is very, very positive. Anwar, you get the last word. No, you said it very well. I think both things, and Pakistan has a huge manpower and young people. 65% of population is young people, and that those young people have interacted with many of the presenters as well, and they have a can-do approach, which is really somewhat different than 2 generations back. Well, now others can do, we cannot do. That has changed now. It's all can do. Other people have done. Why can't we do that? I think that's very, very true. And then Pakistan has all the natural resources available, and the mines. Pakistanis, they have come out of Pakistan and they're done excellent, including names for yourself and many other people. And so will Pakistanis staying in Pakistan. That's what has changed. You can do anything that's possible in Silicon Valley. You can do in Karachi, or you can do in Malir, or you can do in any part of the Pakistan. So very, very bullish as well. Names are very well said. And these type of things that we are doing in Aspire and the collaboration of Pakistan Engineering Council, I think, and we can get there. Alhamdulillah. Inshallah. So thank you very much for joining. Good to have you. Chef Asad, आपने कुछ कहना है तो जल्दी से कह लो, वरना हम इसको वाइंड डाउन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप कुछ कहना चाहते थे कि हाथ खड़ा कर रहे थे? बिल्कुल जी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने अपना स्टार्टअप पिच किया। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी जो है हमारे पास एक सोशल मीडियाज और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अपने उनकी कमी ये है कि वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे। अगर वो प्रेजेंट करने के बाद अगर यहाँ पर आए, और जैसे कि एक मिसाल जो कि एक रोबोट बच्चे ने बनाया था, अगर वो उसको उसका कोई पिक्चर नहीं थी, तो इसी तरीके से न्यूट्रिशंस हैं और दूसरी चीजें हैं। बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो ऑलरेडी अगर अपनी चीजों को सोशल मीडिया और इन सब चीजों पे वीडियोस और दूसरी प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर दें, तो फिर उसके बाद अगर वो अपने रेफरेंस के तौर पे अगर वो इस तरह से चीजें करें, तो वो इसको 3 मिनट या 30 सेकंड में भी जो है अपनी चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं, जो आप बार बार उन्हें कह रहे थे शॉर्ट करें। तो सर मेरी तरफ से ये लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत आला, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर जी। वैसे तो आपने बहुत, वैसे आप बावर्ची हैं, लेकिन बात आपने बहुत अच्छी की है। ये तो दिस इज एक्सीलेंट पॉइंट। You have to be able to give your point correctly, and your slide should have numbers and diagrams, and you're telling a story. You're a storyteller, substantiated by the numbers on the slide. Maybe we'll do a special session how to present effectively someday, if Hassan will allow me. Chale, Khuda Hafiz. Good to see you all. Talk soon. Bye bye.